Okay. Dear students, good morning to you. Firstly, welcome to my channel. In the previous class, we have read about distance and displacement definition. Today I explain the distinction about distance and displacement. Distance and displacement, how they can be distinguished. Distinction means डिवाइड होता है, दोनों में क्या अंतर है. तो what is the difference between distance and displacement? So let us know about this in a tabular form. Distinction in a tabular form. This is the first term. Distance is a scalar quantity. Distance क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है या अदिश राशि है. इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें केवल मैग्नीट्यूड ही होता है. एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है. ये फर्स्ट डिस्टिंक्शन था. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. फर्स्ट डिस्टिंक्शन. सेकंड डिस्टिंक्शन, distance may not be zero. You always confirm that distance may not be zero, but displacement may be zero. ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, बट डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो. डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इसे हम आगे बताएंगे. इसी में इट कंसिस्ट टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी. डिस्टेंस क्या है कि ये टोटल एक्चुअल पाथ जो कवर करता है वो इंडिकेट करता है. इट कंसिस्ट टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी एंड इट कंसिस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. तो ये डिस्टिंक्शन है दोनों में इन ए टेबुलर फॉर्म. जैसे लेट अस सी फ्रॉम फिगर AB 4 किलोमीटर और BC है 3 किलोमीटर. तो AC कितना हो जाएगा? यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रहे हैं. अब यहाँ पर देखिए कि हियर डिस्टेंस फ्रॉम A टू A से लेके A से चले, A से C फिर B और फिर यहाँ लौट गए. तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? AB प्लस BC प्लस AC. ओके, इन दिस वे टोटल डिस्टेंस हो गया 4 प्लस 3 प्लस 5 12 किलोमीटर. बट यहाँ डिस्प्लेसमेंट यदि निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू A यहां से चले और फिर यहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. सो वी कैन से दैट कि डिस्टेंस मे नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो. अब सी हियर इन दिस केस फिगर बी में देखिए, द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम A, ओके, एंड इट मूव्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक. ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है इस तरह से, इन दिस वे, एंड अगेन रिटर्न बैक टू A. फिर यहाँ A पे आ गया. तो इट हैज रेडियस R. इसका रेडियस R है, ये R और सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है. तो यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालते हैं. तो फर्स्टली डिस्टेंस फ्रॉम A टू A क्या होगा? यू नो द फॉर्मूला, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. तो 2 pi R. दिस इज द टोटल डिस्टेंस, 2 pi R. And displacement from A to A, the body start from A and again it return back to A. So in this case, the displacement from A to A is equal to 0. So in this way we can say that the distance may not be 0 and displacement may be 0. This is the distinction between distance and displacement. Okay? Now let us discuss another term based on motion. Okay, right, dear students, after distance and displacement we know the term which can be described, that is motion. Motion can be described by 3 terms. First a speed, second velocity and third acceleration. So let us know about these 3 terms. Firstly, a speed. तो speed क्या है? How it can be defined? It is defined as
the distance covered by a body per unit time is known as a speed. The distance covered by a body per unit time is known as a speed. The formula for a speed is equal to distance upon time. V is equal to S upon T, where V is a speed, S distance and T for time. In this way, distance can be defined. Distance is a scalar quantity. What is its unit? SI unit इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो SI unit speed is equal to distance by time. So distance is measured in meter and time is measured in second. So it can be written meter per second. This is the SI unit of speed, meter per second, or this is scientific unit, meter second inverse. Scientific notation में हम लोग ऐसे लिखते हैं ms inverse. And larger unit is kilometer per hour. Larger unit is also measured in kilometer per hour. Okay, kilometer hour inverse, and it is measured by an instrument. That instrument is a speedometer. You would have seen in the bike. Bike पे आप देखो ये speedometer. When the bike starts, then the speedometer's needle of the speedometer moves. At what speed the bike is going, at what speed any vehicle is moving, it can be recorded by a speedometer. 60 km per hour, 40 km per hour, ये क्या है? ये स्पीड बताता है. तो it is measured by a speedometer. An instrument is set up in the vehicle or any conveyance which record the total speed covered by it. उसका स्पीड क्या है वो कवर करता है और बताता है. At what speed the body is moving, at what speed the bike is moving, 60 km per hour, 80 km per hour. In this way, it is measured by speedometer. Now, second term है velocity. So, velocity, how velocity can be defined? Let us know about velocity. Second term, velocity. Velocity. Let us define velocity. A speed and velocity. Only there is a difference कि speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Definition में केवल direction ये शो करता है. Speed can be defined in this way. It is defined as the distance covered by an object. The distance covered by an object in a given direction. Is known as velocity. So it is defined as the distance covered by an object in a given direction. इसमें direction दिया हुआ रहता है. Direction is fixed in a fixed direction. So that is velocity. But in distance, in speed, that distance only show magnitude. उसमें direction show नहीं करता है. So let us know velocity. What is the formula for velocity? So velocity is equal to the displacement upon time. Displacement upon time. And speed में होता है distance और velocity में होता है displacement upon time. Okay? That is v is equal to s by t. Here v is equal to displacement and s distance, t, v and s, t has usual meaning. Okay? In this way velocity can be defined. So it is a vector quantity. ये वेक्टर क्वांटिटी होता है. वेक्टर क्वांटिटी. इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. यही डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में. डेफिनेशन लगभग सेम होता है लेकिन इसमें डायरेक्शन दिया होता है. गिवन डायरेक्शन. द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी.
And formula for velocity is displacement upon time. In a state of distance, here we write displacement. V is equal to S upon T and V as T has usual. Where V is the velocity यहाँ. वहाँ स्पीड लिखे थे, यहाँ V लिखेंगे velocity. Where V is equal to velocity, S is equal to displacement. S is equal to displacement and T is equal to time. SI unit, it has same unit as like a speed. SI unit of velocity. SI unit meter per second or meter second inverse. Larger unit also kilometer. Larger unit kilometer per hour or kilometer hour inverse, which is scientific notation. In this way, velocity is defined. So velocity is a vector quantity and speed is a scalar quantity. Difference ये दोनों. Formula same होता है, only direction यहाँ से होता है. इसीलिए यहाँ हम लोग distance की जगह displacement लिखते हैं. Velocity is equal to displacement upon time और speed is equal to distance upon time. And SI unit has the same. SI unit दोनों का same होता है. Now the third term, acceleration. Let us. Okay, dear students, let us know about acceleration. What is acceleration? Acceleration क्या होता है? Acceleration का हिंदी मीनिंग होता है त्वरण. त्वरण इसको कहते हैं. How acceleration is defined? Acceleration is defined in this way. It is defined as the rate of change of velocity with respect to time is known as acceleration. The rate of change of velocity with respect to time is known as acceleration, and it is a vector quantity. यह भी vector quantity है. Acceleration के लिए फॉर्मूला क्या डिराइव करते हैं? Acceleration is equal to होता है change in velocity by time. A is equal to v minus u upon t, where v is final velocity, u is initial velocity, and t time taken. And A for acceleration. तो A is equal to v minus u upon t. इसमें हम लोग आगे और पढ़ेंगे. इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v is equal to u plus ad. उसमें डिस्क्राइब करेंगे इस फॉर्मूले को डिराइव. अब है कि एक्सेलरेशन होता है क्या? तो एक्सेलरेशन तो होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन. पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है और निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन? When the velocity of a body increases with respect to time, so that is called positive acceleration. As the bike starts and the speed of bike increases, so this is positive acceleration. And when you apply the brake, then the velocity of any moving body decreases. So in this case, in a state of acceleration, there will be deceleration or negative acceleration. So negative acceleration is also called retardation or deceleration. Understood? In this way, the acceleration is classified as a positive acceleration and negative acceleration. When the velocity of a body increases with respect to time, so that is called positive acceleration and denoted by A only, yeah, positive plus A. And retardation or deceleration is denoted by minus sign. That is negative acceleration is called retardation. Yeah, it is also called deceleration. In this way, acceleration can be defined. You will read later about this. The formula for the derivation, v is equal to u plus at. Equations of motion में पढ़ेंगे. Newton's law of motion जो है उसमें पढ़ेंगे. In this way, the motion of a body can be described by three terms: speed, velocity, and acceleration. We discussed about the uniform motion, non-uniform motion, or uniform velocity, non-uniform velocity, or equations of motion. Okay, that's all. Okay.